Hello students, today we are going to get a start from your Behind books. First poem, the name of the poem is The Road Not Taken, and this poem has been written by the poet Robert Frost. The Road Not Taken. This well-known poem is about making choices and the choices that shapes us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. In this poem, students, you will see that Robert Frost has presented the idea two roads diverged in a yellow wood. The poet is telling us he just has depicted the idea of the diversion of the road in a yellow wood, and he also presented his sadness that sorry, I could not travel both. He could not travel both the roads, and be one traveler long I stood. The poet long stood being a traveler and looked down one as far as he could. The poet said, I went down to look the way to where it went in the undergrowth, from where he can see the undergrowth of the grass. The rhyming scheme of this passage is of this para is A B A B. In the very first line, there is metaphor. This whole poem deals with the metaphor because this has been compared, and imagery is also here, and the poet is very sorry because he could not travel both, so antithesis is here, and anaphora is there also in this line because of a repetition of and in the line, in the third and fourth line. Now the second para, then took the other just as fair. The poet Robert Frost has presented the idea he decided to take the other just as fair lying before him, and having perhaps the better claim, because this other way was having perhaps better claim before him, because it was grassy and wanted beer. Because this way was grassy, having more grass, and wanted beer, and it was too easy and amusing to move on the grassy way. Personification is here, students. Though as for that, the passing there had borne them really about the same. Both the ways, according to Robert Frost, were lying same, and both that morning equally lay. Next morning, both the roads were equally lying before him. In the next para, in leaves, no step had trodden black. No leaf in the way, on the way, were trodden black, because nobody has passed from there. Oh, I kept the first for another day. Robert Frost has presented the idea that he selected the another way. Antithesis is here. Yet knowing how way leads on to the way, yet the poet well known about this, which way this way will lead to him. I doubted if I should ever come back. The poet Robert Frost is having a type of doubt in his mind whether he will be back to his life again or in future or not. In the next para, I shall be telling this with a sigh. Poet Robert Frost is saying that sometimes our decisions made by us take much more time to give result. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood. Two roads were diverging in a wood, and I, the poet Robert Frost has presented himself, I took the one less troubled by. He took the one less troubled by, and that has made all the differences in his life. The poet has presenting the idea that selection of the other way that was less troubled has made all the differences in his life. Now I am telling you this poem in Hindi. रॉबर्ट फ्रॉस्ट के सामने दो रोड पड़े हैं येलो वुड में, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि मैं इन दोनों रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकता, क्योंकि एक ट्रैवलर होते हुए वह बहुत देर तक खड़े रहे और जितना झुककर देख सकते थे वह उस रास्ते को देखते रहे। इस पैरा में स्टूडेंट्स मेटाफर है यहाँ पर, क्योंकि कंडीशन को कंपेयर किया गया है, इमेजरी भी है सेकंड लाइन में, क्योंकि वो एक तरह से कंफ्यूज्ड स्टेट उनकी प्रेजेंट की गई है, एंथिसिस भी है, एंड वर्ड की वजह से यहाँ पर एनाफोरा भी है।
देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दूसरा रास्ता जो उसी के समान अच्छा सा पड़ा हुआ था सामने, वो लेने का डिसाइड किया। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, शायद वो रास्ता उससे भी ज़्यादा अच्छा था, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि यह रास्ता कैसा था, ग्रास से भरा हुआ, और ऐसा रास्ता चलने में बहुत अच्छा लगता है। पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पर, दो एज फॉर एज द पासिंग डे, क्योंकि यहाँ पर किसी के भी कोई भी चलने के निशान नहीं थे। हैड बॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, और रास्ता बिल्कुल पहले की तरह से पड़ा हुआ था। थर्ड पैरा स्टूडेंट्स, एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली, दैट मॉर्निंग इक्वली में, दोनों रास्ते अगली मॉर्निंग उनके सामने एक से एक समान पड़े हुए थे, कोई भी पत्तियाँ कुचली हुई नहीं थी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी चलकर नहीं गया था। ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया कि मैंने पहला रास्ता चुन लिया दूसरे दिन। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू द वे, यह जानते हुए भी कि यह रास्ता मुझे कहाँ ले जाएगा। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, मेरे मन में एक तरह का शंका है कि क्या मैं कभी वापस आऊँगा। नेक्स्ट पैरा, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, लेकिन मैं एक लंबी आह भरते हुए बताता हूँ। समवेयर, कभी कभी युग निकल जाते हैं लिए हुए फैसले को समझने में। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, क्योंकि दो रोड कहाँ बट रहे थे, जंगल में। आई टुक द वन लेस ट्रबल्ड बाय, मैंने वो रास्ता चुना जो कम चुना हुआ था, और इसने मेरे जीवन में सारे अंतर दिखा दिए। इस लास्ट पैरा की लाइन में समवेयर एजेस एंड एजेस, क्योंकि यहाँ एजेस एंड एजेस वर्ड को फिर से लाया गया है, समवेयर एजेस एंड एजेस, हैंस यहाँ पर क्या है, एलिट्रेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, रीड एंड लर्न द पोएम।